So in the last lecture, we had completed chapter 3, but there were some issues that were remaining, especially with respect to estimation. So if you could remember, we had done this equation. How does a receiver can be implemented? How does a receiver can be implemented to give us the channel coefficients? So you could just compare with the previous mathematics. So receive signal comes out to be the energy. Now remember what is happening here. Previously, this h was becoming h mod square or h mod, and we were detecting the symbol that was sent. Here it is opposite because we know what is the symbol that has been sent. So that is why symbol becomes u mod and it becomes the energy, while the channel coefficient is needed to be estimated. So let us say we have we want to estimate the channel coefficient for the lth tap. So receive signal will be like this, as we have seen before, times HL. But you could see that this is one realization. So what we do, we calculate this value of the receive signal for k snapshots. So we have a total of k snapshots, and from those k snapshots we will try to apply estimation theory to get the value of HL. All right, this part we had done, but now how to get this equation? Its proof was remaining. All right. Now second thing, we were doing studying estimation theory. If you could remember here, we had studied scalar. I have given the proof of scalar. Yes, this one was given. Then we need to give the proof for estimation in vector space. That I also was giving, but then I realized that here it is a little bit different as compared to chapter 2. If you could remember, in chapter 3 we had ht over h mod, not h mod square. So here it is a little bit different that I realized. So I have made my new note so that everything is clear. So how to estimate in a vector space? Remember that this mathematics is based on estimating x, meaning what is the exact value of x. Then we will just map it to estimation of h once we go to the mathematics of chapter 3. So we know once you need to estimate x, we have the coherent channel modeling. You multiply the received signal with ht over h, but here we deliberately multiply not with ht over h mod, but ht over h mod square. So it is a little bit different from that what we have done in the early part of chapter 3. So HTH, now y is this thing. For the value of y, HTH will become h mod square, h mod square, h mod square will cancel. This will be HTW over h mod square and this h mod square. Now you can remember what happened
in section 3.2.1, once we had the same noise and it was being done with, there this noise was, you know, this was CN0 and not, it was complex Gaussian random variable complex. So it was not N0 by 2 but N0. And once we did that, and this mathematics has been done in the previous notes, you could see finally it came out to be CN0 and not. But the only difference in this chapter is that first of all it is real noise, it is N0 by 2, and this is same thing, you know, HT, only conjugate is not there because it is complex. And then here we have H mod square, but let us say if I just put HT over H mod, this will be N not by 2. But if I put HW or H mod square, so you know this will be 1 H mod, so 1 H mod is remaining, which will be 1 over H mod here, 1 will go inside, so it will become H mod square. That is why for our case in estimation, we will have this signal and the noise will now become N naught over 2H mod square. So we saw in the first section that if we have just X, which is to be estimated signal, W is noise, then the linear estimator comes out to be like this. Correct. So for this case, which we are doing right now, you can see that now Y bar is actually X plus this much. It's again a scalar equation. Alright, it's again a scalar equation. But now W is not N naught by 2, but you could see it as N naught by 2 H mod square. So we will just replace, now my C will become, everything is same, only N naught now becomes N naught by 2 H mod square. You can multiply by H mod square, this will come here, simple mathematics. Then linear estimator, you have to multiply this with the Y signal to give you the linear estimate of X. So this will be X bar is equal to CY, so multiply by this. So what is a vector form of C? So we can write CT. So we know that Y bar is HT over H mod square into Y. Alright. So we don't write Y, we just write the vector form. Is this thing, it cancels, hence we also have the vector version of C. So if you have a vector, you can just multiply this because Y is now a vector and you will get the linear estimator, and finally CT with YT it will just CT with Y will give you the linear estimate or the scalar estimate of X. Now MMSC was this equation. In the equation B, you know, there was no H mod square, but now we have H mod square. We have just seen noise is H mod, we just put H mod square. This is the minimum mean square error provided we are detecting in a vector space H. Then for complex space, you can see everything is same, only you know you have X mod square, but this will become X mod because X is a complex. Instead of EX squared, this will become X mod square because it's a complex number. Just change, everything remains the same. MSC is also the same as the scalar version of non-scalar estimate, non-complex scalar estimation. So even if we have a vector now, let us say we have a complex vector, same equation from C here, from this equation, but everything will now become complex. This become complex, so become conjugate, and you can see rest will remain the same. Same thing will be here. You can see this becomes conjugate, you know, H Hermitian, and this becomes like this. Similarly, MSC will be this H mod square and not. Everything is same, thus X becomes X mod square. So actually we have driven the estimation for all linear estimation. We have driven the mean square error
as well as a linear multiplant, both for scalar and vector estimation. Let's come back to the problem that we were facing in chapter 3. So I started the lecture that actually receive signal was this, right? So what we do, we receive signal, we take, this is for the LET tap, receive, this is HFL, this is noise for the LET tap, and these are K samples. We have taken K different samples of the receive signal with the same tap. Now we sum all these kth RK values and divide by K, so we take the average, so that we get the average value of our estimate. This will be, so you can see this is just a constant. This will be, this is because of K times, if you add them, divide by K. This will be different noise values, will be summation of WK. You can see that this will be summation of WK, K different values, and you know, once we have these CNs, when they are added, added twice, this will become 2 times and not like that 3 times. So they are being added K, so will become K times and not. This will be CN, K and not. So you can divide this thing, this becomes CK N naught divided by K. So you know, K, if it goes inside, so 1 over K square, so K into K square will become N naught over K. And this K cancels, this is like this is like this. So what is the estimate? So this is my X, so estimate of this is given here, where you know this is just the energy value. Again, you will apply the same equation, the complex form of linear estimation. So you will be applying this equation simply. E of x square plus N naught. My X is this thing, right? So x mod square x plus noise is not N naught, is rather N naught over K. So I just put N naught over K, and I will multiply this with the input signal Y of K, which is actually summation over K. So you can see this become under root becomes square. Energy is constant, can comes out of the expectation. So also comes out here like this. This is here. This is everything is in its place. Now we already know that the variance of HFL is 1 over L. So in the book that the variance of our so going back to chapter 3 part that was needed to be driven. सर 15 सितंबर से एग्जाम्स हो रहे हैं, 15 से 25 के दरमियान। 15 से 25 सितंबर या अगस्त आप कह रहे हैं? सितंबर सर सितंबर में वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही। हाँ, वो यही सोचा गया था, काफी बहस हो रही थी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फैसला हुआ था ना कि ये ऑनलाइन में बहुत मसाइल आ रहे हैं। अब जैसे आज ही मैंने क्विज लिया अंडरग्रेड का, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि भाई वो अब 20 मिनट पे हमने तो बंद कर दी, वो आपको पता है डेडलाइन। तो जब बंद हुई तो स्टूडेंट्स अब शोर में काफ़ी की जमा हो गई। मैं काफ़ी ने कहा जी हमारी वो बैंडविड्थ रुक गई, इंटरनेट और बिजली चली। किसी ने कहा जी मैं जमा करा रहा था। अब भाई डेडलाइन तो कंप्यूटर है, जब डेडलाइन होगी वो रोक देगा हर चीज़। तो काफ़ी ना इश्यूज हैं। तो ये फिर क्या कहा गया था कि जी एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए, सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो फाइनल एग्ज़ाम्स रह गए हैं सारे वो हम 15 सितंबर जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो फिर उस वक्त तो वैसे ही खुल गई होगी, लोग भी सारे हॉस्टल वगैरह खुल गए होंगे, तो स्टूडेंट्स आ सकते हैं और स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम दे देंगे। मगर इस पर बहस चल रही, मुझे ये नहीं पता इस वक्त फाइनल हुआ कि नहीं, वो पता चल जाएगा अभी। मगर इस पर दोनों तरफ पॉइंट्स ऑफ व्यू चल रहे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए या इन पर्सन एग्ज़ाम लिया जाए। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? सर क्लासेस भी 2 सितंबर तक ही कह रहे हैं जाएंगे, लेकिन हमारा तो कवर हो चुका है, यानी कि जो ड्यूरेशन थी। नहीं क्लासेस जैसे 2 सितंबर तक, अंडरग्रेड का तो ये लास्ट वीक उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और मास्टर्स का मैक्सिमम भी जाएगा तो 8 अगस्त तक जाएगा, उसके आगे तो नहीं जा सकता।
ठीक है सर। वो तो फिर ये होगा नया सेशन स्टार्ट कर देंगे ना, क्योंकि जब एग्जाम 15 से 25 सितंबर करेंगे तो फिर उसके दौरान पुराने जो उस वक्त हो रहा होगा करंट, उसको फिर होल्ड रखा जाएगा। मतलब या तो उसके साथ साथ रहते कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये तो मैक्सिमम 8 अगस्त तक। अब ये सवाल है कि 8 अगस्त तक जाएगा, ये वीक लास्ट होगा, ये डिसाइड करना है इन्होंने। मुझे ये नहीं पता चला कि जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिसाइड, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा सर जो टीचर्स की मीटिंग हुई है उसमें क्या डिसाइड हुआ है? टीचर्स की मीटिंग हुई थी? जी, मैंने कहा जो टीचर्स की मीटिंग हुई है तो उसमें फिर क्या डिसाइड हुआ? मैक्सिमम टीचर्स ने क्या एडवाइस की है? कौन सी मीटिंग हुई है? नहीं, ये टीचर्स की मीटिंग होती है ना इस सिलसिले में कि एग्जाम का कोर्स कहाँ तक कवर हो गया या एग्जाम कब होने हैं। अभी तक तो वैसे इस लास्ट मीटिंग में मैं था जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट की थी, उसमें यही बहस हुई थी कि 8 अगस्त रखा जाए ना रखा जाए, मगर अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ था। ठीक है सर। जी, वो पता चल जाएगा। वैसे मैंने भी इतना भी पूछा नहीं, वो असल मुझे बीच में जाना पड़ गया, वो बारिश तेज हो गई तो पानी अंदर आ रहा था घर में, तो मैंने भी मीटिंग छोड़ दी। मगर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। मैंने तो कहा था 8 अगस्त तक चलने दे क्लास, है 16 लेक्चर्स हो जाएं। बहरहाल वो जैसा डिसाइड करें, हमें तो इसमें एतराज़ नहीं। अब देखें, so we were stuck. We wanted to prove this equation and it was really become difficult to prove that, but we could see that HFL actually has a variance of 1 over L. Now remember here that this is a zero mean complex Gaussian and all that, you know, all the zero mean. So when zero mean, then you know then the variance or it is equal to EX square. So we can put this 1 over L as EX square. So this EHL here is EHL square. So I can put 1 over L here, right? 1 over L. This becomes 1 over L. Then I multiply numerator and denominator by LL, and you can see this will LL, this will become like this. And then furthermore, I can take this K here, this becomes KE, this becomes N naught L. Hence, we have driven what needed to be driven, that the estimate will be equal to this thing, and this is what I have driven here. This proof I have done. And the second proof that was actually this one, that the mean square error is actually equal to this thing. And then we said that actually it is mean, I said that the proof we will do later, but I had done all the discussion that finally mean square error actually depends on this factor, and then I told you if this factor is very, very large, all right, and this factor is very, very large, and you can see mean square error will be 1 over very large thing, will be very, very small, very, very smaller than 1 over L. Then this means that we have very small error and there is no problem. But vice versa, if this factor is very, very small and this is 1 over very small, so this will be very, very large and the error will be very, very large as compared to 1 over L. Then that case we will have a very big problem, because our estimate will be almost of the same order as of 1 over L. This effectively means that we do not know what is the channel coefficient, all right, because error will be large. So this was all written and it was all discussed in the last lecture, but we need to drive this factor. Again, I went to the basis and step by step I was able to do that. So you can see the square error from the F equation. So again, same equation, the different we will use the equation of MMSE of a complex scalar Gaussian, this F equation, just apply this equation, right? But we know that N naught is different, and let us apply EX square here, proper EX square. So our N naught is now N naught over K, and you can see MSE is your signal, X is now under root HL. Again you can see that this under root E will become square, E will come outside, EHL mod square will be 1 over L, 1 over L like this. Then what I can divide both sides by 1 over epsilon, epsilon cancels, becomes epsilon cancels, but epsilon will come here. Then I can take this 1 over L, write it like this,
All right. Then this, I can take this L inside, this becomes 1, this becomes L naught epsilon K. Then I take this N naught over K also into the denominator. This will become K over N naught. So I take this will become K over N naught, K over N naught. And this will become K N naught will cancel, this will become like this. Remember, this is MMSC which we are finding. So what is MMSC? MMSC is actually the actual value minus the estimate. Now we are actually estimating under root E. So you can see that you can just take under root outside because this is deterministic. So under root E square will be under root E common outside. This becomes square. E comes outside. E into MMSC. So E, the MMSC that we want is actually the difference between HL and HL estimate. So it will be E into MMSC. E into MMSC. Here I take L common. So I take L common. Okay, this will become K over L N naught. And this will become 1 over epsilon. Then I take, L over epsilon common. This will become 1. This will become K epsilon L over N naught. L over epsilon. This is epsilon here. So I divide by epsilon. This is cancelled. And this 1 over epsilon will cancel with this. So I will finally get this equation, which was the required equation that we needed to prove. Hence, this means we have almost done all of the mathematics of chapter 3 as well as studied all of the related theory, and hence we can now say that chapter 3 is now completed in all respects. Now, any question with respect to chapter 3 you can ask now before we move on to the next chapter. Alright, so no one has any question. We move to chapter 4. Now remember, सर क्विज जो है जो टॉपिक्स सर क्विज जो है जो टॉपिक्स मेंशन किए हुए उन तक ही आएगा ये आज तक पढ़ा है वो उसमें आएगा? नहीं, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया, क्विज उसी में से आएगा जो मैंने आपको पहले से भेजी हुई आउटलाइन, जो रेड कलर हुआ है, और उसमें सारा कुछ मैंने मेंशन बता दिया आपको। अब ये कि क्विज का मैं थोड़ा सा और आपको स्पेसिफिक्स बता दूं कि इस दफ़ा मैंने क्विज दिया अंडर ग्रेड का, तो उसमें काफ़ी मसाइल पैदा हुए, तो मैं नहीं चाहता कि इस दफ़ा कोई मसला पैदा हो। तो वो आपको देखने के तकरीबन आई थिंक 10 मार्क्स का होगा। वो इंशाल्लाह एक असाइनमेंट के तौर पे ना एक फोल्डर बन जाएगा MS Teams के अंदर, और उसका यानी कि टाइम फ्रेम होगा। जैसे अगर हम 6:10 पे स्टार्ट करेंगे तो 6:30 तक आपने उसको सबमिट करना होगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जो आज के मसाइल के बाद क्या कोई सिर्फ 20 मिनट्स की विंडो होगी एक, ठीक है, और आपके नाम से आपकी टीम के अंदर असाइनमेंट्स के फोल्डर में एक फोल्डर बना होगा, उसका नंबर होगा क्विज 3 असाइनमेंट्स में क्विज 3। तो आपने जाके अपना उसमें सेव करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो ये मैं कर सकता हूँ, मैं एक मॉक किस्म का बना देता हूँ फोल्डर, ताकि आप लोग उसमें अपना डाल सकें अगर आप चाहते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस है, कोई और कोर्स में आपने किया हो, तो फिर हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको सबको प्रैक्टिस है असाइनमेंट्स को अपलोड करना MS Teams में। नो सर, अभी तक हमने किया ही नहीं है। अभी तक कोई किसी कोर्स में नहीं हुआ आपका? सर हमारी प्रेजेंटेशन हुई है, वो भी अच्छा, प्रोजेक्ट बना के उसकी प्रेजेंटेशन ना वो स्क्रीन शेयर करके दे दी थी हमने। जी, अच्छा, चलो ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बना रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं अभी आपके सामने बनाता भी हूँ। अब आपने ये करना है कि एक अपना कोई फ़ोटो लें और लेके आपने अपने अपने रोल नंबर के अगेंस्ट उस पर आपने अब जो है वो सबमिट करना है, अभी इसी वक्त करना है आपने। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें अच्छा खासा टाइम खर्च होता है। आप तस्वीर लेंगे, अगर तस्वीर को लैपटॉप में, तो लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करके उसको अपलोड करना होता है। तो स्टूडेंट्स को मैंने 12 कहा कि भी देखें 20 मिनट है, मगर एक्चुअली 20 मिनट नहीं, आप 15 मिनट में करें, 5 मिनट में ये सब चक्कर लगेगा आपको। मगर स्टूडेंट्स नंबर के चक्कर में एंड तक करते रहे, और फिर जब बारी आई तो वो डेडलाइन आ गई। तो इसमें मैं आपको मेल नहीं कर सकते? मेल नहीं कर सकते ना, ये डेडलाइन के हिसाब से है ना। मकसद ये रखा गया कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं वो उतने ही टाइम फ्रेम में करें, वरना लेट हो जाएंगे ना। इसमें बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। इसमें MS Teams में अगर आपने लेट 1 सेकंड भी किया तो वो ब्लॉक कर देगा आपको। और उसमें फिर ये भी है कि आप अगर चाहें तो डेडलाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप पहले से बता दें कि जी 5 मिनट एक्सटेंशन है, मगर वो एग्जैक्ट मुझे टीचर को बता देगा कि इन्होंने 1 सेकंड लेट किया, ये 2 मिनट लेट आए हैं, 3 मिनट लेट आए,
जो लेट होता है फिर हम उसके नंबर काट देते हैं, ताकि स्टूडेंट को विद इन टाइम फ्रेम जो है ना काम करने की आदत हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए ज़ाहिर आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, अभी आपके सामने सारा प्रोसेस होगा, और आपने मेरे जो है ना अपने एंड पे सारे स्टूडेंट्स से कम उस पर तस्वीर लेके उसके ऊपर अपलोड करना है। हाँ जी, कितने स्टूडेंट्स आए हुए हैं आज? ये तो देखें ना ज़रा, 5 आए हुए हैं। ठीक। तो ना ये प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, तो ये मैं आपके सामने आज कर देता हूँ ताकि आपने थोड़ा सा इसको अपने एंड पे करें भी। तो या तो फिर मैं इस दफ़ा के जो मैंने हालात देखे तो ये कर सकता कि मैं 5 मिनट उसमें दे दूँ, मगर जो बंदा फिर 20 मिनट के बाद जमा कराएगा उसके फिर आधे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ताकि हम डिस्करेज करें कि स्टूडेंट्स लेट करें या फिर इस तरह का कोई काम करें। सर आप 20 मिनट तो प्लीज़ रख लें और 2-3 मिनट आगे एक्सटेंशन दे दें कि जब सबमिट करवानी है उसकी, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। असल में ना वो जो यहाँ सिर्फ ऑनलाइन के मसाइल आ रहे हैं ना, वो यही आ रहा है कि जी स्टूडेंट्स जो है ना वो चीटिंग करते हैं और फलाना करते हैं, फिर एक दूसरे को सेंड कर देते हैं, और सारे आपको पता है जो मसाइल मसले आ रहे हैं। तो इस वजह से उनको कहा भी बेशक स्टूडेंट कम करे, मगर उसको टाइम कम दें, बाद में आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं उन मार्क्स के साथ, ताकि चीटिंग ना होने पाए। ये है सारा कॉन्सेप्ट। सर अब तो ओपन बुक होना चाहिए। तो जाहिर है वो हम चेक तो नहीं कर सकते ना आपको, यहाँ तो आप मेरे सामने बैठे हुए, तो आप तो अपने लैपटॉप के सामने होंगे, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता आपको, ठीक है ना। वो तो सारा कुछ हम लोग तो, इसलिए पेपर मुश्किल होता है ऑनलाइन पेपर जो है। और ये ऐसे ही होता है कि ज़रा बुक आपके सामने, नोट्स भी आपके सामने हैं, तो टीचर उसका पेपर बनाता है कि आपको ज़रा उसके अलावा काम करना पड़े। टाइम इसमें कम रखा जाता है कि स्टूडेंट्स को डिस्करेज किया जाए डिस्कशन से या एक दूसरे को सेंड करने से और ये सारा कुछ। तो इस वजह से आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे, इसमें आपको सब कुछ करना होगा। तो यही मेरा होगा कि 15 मिनट्स करें, बाकी 5 मिनट्स उसको अपलोडिंग में लगाएं आप। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है सर। मैं कह रहा था कि अभी आप चाहते हैं कि उसकी प्रैक्टिस कर दी जाए, असाइनमेंट्स अपलोड करने की। सर मैं तो कह रहा हूँ बाकी से भी पूछ लें, अगर वो भी चाहते हैं तो करवा दें। अच्छा, बाकी कुछ कहना चाहते तो बता दें, करवा मैं दें आप सर। करवा दें। ठीक है, अब मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ साथ रहें। सर ये लेक्चर के बाद ना कर लें, वो जरा लाइट गई हुई है तो फिर कंप्यूटर पे, अभी मैं मोबाइल पे हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल पे देख सकते हैं आप, इसमें क्या है, अभी आपको नहीं सब वो समझ में आ जाएगा। पिक्चर पीसी से मैंने के लेनी है ना, या पिक्चर कोई भी सेंड कर दे। नहीं नहीं, वो आप मत सेंड करें,
आप खाली अच्छा स्टेप्स देख रहे हैं ना, ठीक इसमें है, क्या है, आप मत ठीक सेंड है करें सर, तो सिर्फ एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको। देखिए मैं ठीक है ना सर, आप वो पहले दिखा दिखाता हूँ कि आपको नजर आ रहा है मैं असाइनमेंट्स में जा रहा हूँ। अभी तो ये आपका काम नहीं जो मैं कर रही थी, तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हम कैसे करते हैं। ठीक है सर, वो बता दें। अब जैसे आपका वायरलेस है ना, तो मैं इसमें एक असाइनमेंट बनाऊंगा। तो मैं जो पहली असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ फ्रॉम एग्जिस्टिंग बना लेता हूँ। तो मैंने अभी भी यही क्विज जो है वो लिया। अब आपको पता है 112 बच्चों में से सिर्फ 23 बच्चे जमा करा सके अपना क्विज टाइम पे। तो मैं सीधे से इनसे ले लेता हूँ जो आज ही क्विज लिया है इनका। मैंने इनका क्विज 3 जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो ये तो आपको कुछ नहीं करना, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये उनके लिए। अब मैं इसमें ज़ाहिर है आपके लिए चेंज, उनका 13 था, आपका -10 मार्क्स हो गया। ये चैप्टर हमारा तो खैर 3 हो जाएगा। मार्क्स हमारे देख लेते, आई थिंक 10 होंगे, मैं चेक कर लूँगा। और ठीक है, अब ड्यू डेट सेट करनी है। अब इसमें ये होगा कि मैं, अब हमारा वेडनेसडे का क्विज है, मैंने इसमें 29 डाल दिया, ठीक है। मैंने इसमें टाइम सेट किया। अब टाइम मैंने क्या सेट किया है कि क्योंकि हमारी 6 PM पे क्लास होगी, तो मैंने इसमें 6:30 दे दिया है। अब उस वक्त तो मैंने ना कोई लेट टर्न इन्स को अलाउ नहीं किया था। तो फिर जो मसाइल, इसमें सोच रहा हूँ कि ना मैं लेट टर्न्स को अलाउ कर देता हूँ। मगर इसमें आप ये याद रखें कि जो बंदा भी 20 मिनट के बाद जाएगा उसके आधे नंबर वैसे ही डिडक्ट हो जाएंगे। ये पॉलिसी मैं पहले ही इसमें लिख भी दूंगा, अनाउंस भी हो जाएगी। तो वेडनेसडे को ही मैं इसमें ये कहना कि इसको जो क्लोज टाइम है ना, अब मसला है क्लोज टाइम इसमें दे ही नहीं सकते। हाँ, वो नहीं हो सकता क्लोज टाइम इसमें, आधे घंटे से कम आप दे ही नहीं सकते। इसलिए लेट टाइम्स को हम अलाउ कर ही नहीं सकते। तो वो ये होगा कि मैं आपको चले 6-8 पे मैंने क्विज दे दिया। मैं सोच रहा हूँ हम इसको ना वो कर देते हैं, इसको 7 o'clock कर देते हैं, 7 PM। थोड़ा सा लेक्चर हो जाए फिर स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी, ये तो हमने इसको भी 7 PM कर देते हैं। इसीलिए वो आप दे नहीं सकते, इसको बढ़ा नहीं सकते ना, वही मुझे भी प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो आप देखें ना, लेट अटेंडेंस आप अलाउ नहीं, तो लेट अटेंडेंस अलाउ करें तो फिर आप आधा घंटा देना पड़ता है मिनिमम, वो हम दे नहीं सकते, तो प्रॉब्लम बन जाता है। तो अब आपके पास, अब मैंने आपको जो है 6:38 पे मैंने आपके सामने क्विज रख देना है। क्विज कैसे रखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब देखिए ना ये क्या हुआ, पहले इसको बना लेते हैं हम लोग। तो ये असाइनमेंट के तौर पे एक क्विज बन गया है। इसमें मैं इसको असाइन कर देता हूँ। अब क्या हुआ कि जनरल पोस्ट एरिया में ना आपके लिखा हुआ आ जाएगा टीम्स में कि जी आपके लिए एक असाइनमेंट क्विज बन गया। ये देखिए, ये आपको लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप जाएंगे तो आपको अपना व्यू भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने ये क्या करना है कि आप जाके अपना अपलोडिंग शुरू कर दें। कोई तस्वीर लें किसी भी नोट्स वगैरह की, और तस्वीर लेके इसमें ना डालें आप। देखिए अब आपके सारों के नाम आ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं। अब जो जो टर्न इन करेगा मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि उसने टर्न इन कर दिया, ठीक है। तो आप लोग टर्न इन करना शुरू कर दें। और इसमें स्टूडेंट व्यू आप आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जी देखें चैप्टर 3 है और ये इसके सारे कुछ हैं। और मेरे पास ज़्यादा डिटेल है इस वक्त कि मैं सारा कुछ देख सकता हूँ कि जी ये इस किस्म का है, मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। सारा कुछ है, तो कल मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है कि अपना अपना, इधर कोई मुश्किल नहीं, आप अपने जब जाएंगे अपना क्लिक कीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा फाइल को। फाइल जैसी अपलोड होगी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि फाइल आ गई। तो ये बजाय नॉट टर्न इन के टर्न इन हो जाएगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे आपकी फाइल नज़र आ जाएगी, ठीक है। सारों को समझ आ गया? तो अपने अपने तौर पे फाइल्स आप डाल दें, ठीक है। तो मगर ये कि आपने ये ख्याल करना है कि जब आप क्या कहते हैं उसको, एग्ज़ाम से पहले सारा डिलीट कर दीजिएगा, ताकि फिर आप जो हैं वो
प्रॉपर कोई सपोर्ट कर सकें बजाय जो आपने ये फाइल सपोर्ट की। ठीक है, कोई ये क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर मैंने अभी एक फाइल डाली है, देखिएगा बारिश हो रही है। हाँ तो वो हो जाएगी। आपका रोल नंबर क्या है? सर 42 अच्छा, 2019। देख लेते देखें, आपने डाला है quiz.docs, यही डाला है ना आपने? जी। अब देखिए मुझे पूरी हिस्ट्री आ जाती है इसकी कि असाइन था, व्यूड हो गया। जब मैं इसको चेक करूंगा मैं डेट कब चेक हुआ, अगर आपने लेट जमा कराया तो वो लेट भी आ जाएगा। एक एक चीज़ जो है वो मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगी इसकी। ठीक है, जैसे आपने ये ख्याल रखना, जो प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के साथ कि वो देर लगा देते हैं। मैं ये बता रहा हूँ 5 मिनट रखें। ठीक है, बाकी इसमें ये ना परेशान कि मैं पूरा नहीं कर सका, तो कोई भी नहीं कर सका, हर को 15 मिनट ही मिलने हैं। आगे से रिलेटिव ग्रेडिंग है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना टाइम मिला है उसको यूटिलाइज करें। 5 मिनट रखें कम से कम। ये इन मैं वैसे इंशाल्लाह 2 मिनट पहले ही आपको ना, अब होगा ये कि मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट इसको सर डॉक्यूमेंट शो हो रहा है कोई? हाँ जी, आपका डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। आपका तो दिखाया मैंने आपका। सर वो तो मेरे नाम ये डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। जी जी सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा मेरा सर, मैं इधर से कर रहा हूँ सर। हाँ, तो उसको आप चेक करें क्या मसला है अपना। इनका तो आ गया ना, लेकिन एक वैसे अब मैं इसको ओपन इन वर्ड, या मैं इसको एक्चुअली डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ से जैसे खुलता नहीं है वर्ड, तो मैं डाउनलोड कर लूँगा, मेरे पास आ जाएगा। अगर आपको पिक्चर देंगे तो वो यहाँ नज़र भी आई थी, PDF तो फ़ौरन नज़र आ जाती है, वरना बाकी मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो मैं फाइल को खोल मैंने सकता हूँ। PDF ही दिया था वो। अच्छा, अभी तो आपका quiz.docs आ रहा है। और किसी स्टूडेंट ने किया तो वो आप उस पर आप देख सकते हैं। मुझे तो आपका एक फाइल आ रही वर्ड की, इसमें क्विज लिखा हुआ है। आप चेक कर लें आपने क्या अपलोड किया। मे बी आपने कुछ और एक खाली फाइल आ रही मेरे पास क्विज के नाम से। सर मैंने अंदर एक डॉक्यूमेंट वो वर्ड का PDF का ऐड किया हुआ है, वो जो रिवाइज नोटिफिकेशन था ना यूनिवर्सिटी का ही, एग्जाम कब हो रही है ये वाला। सर हमें तो समझ नहीं आ रही कि डालना कैसे है इसमें फाइल। हाँ तो आप समझिए ना, प्रैक्टिस करें, अभी आपके पास टाइम है। अभी जो है ना ये उमैर आपका मुझे ना आ रहा है, मगर वो नहीं आ रहा जो आप कह रहे हैं। तो इसमें आप प्रैक्टिस करें, इतना मुश्किल नहीं है। अपने अपने और किसी ने किया? और नहीं, आयजा अहमद ने तो डाला नहीं। और किसी ने अगर डाला कोई PDF तो सर बताइएगा। मैंने अभी की है। आपका क्या सही। रोल नंबर? हाँ कोई बात नहीं, रोल नंबर क्या आपका और नाम? 43 अवैस सईद। अवैस, तो आपका ईमेल क्या होगा? सर ये अवैस मक्का अवैस मक्का। चौथे नंबर पे जो चेक कर, जी। नहीं ये तो आ रहा है नॉट टर्न्ड इन, आपने टर्न इन नहीं किया। सर मैंने अभी टर्न इन किया, दोबारा का टिक किया है, देखिएगा जरा। अच्छा, आपने टर्न इन नहीं किया। आपकी टर्न में क्विज डॉक ही आ रहा है। अच्छा, ये तो नहीं कि वो पोस्ट डेट की वजह से हम लोग फंस रहे हैं? सर मैंने भी डॉक्यूमेंट्स डाला है सर, शकूर अहमद चेक कर लिए। जी मैं चेक कर सकता है इसमें ना। मैं देख लूँ बहुत दफ़ा ना पोस्ट डाल देता है, उससे पहले वो फिर लेता नहीं है। 1 मिनट चेक कर लो। अच्छा, ड्यू डेट हो गई वेडनेसडे हो गई ना, वेडनेसडे का हमारा क्विज है। ठीक है, इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं। ठीक है, अच्छा हाँ जी, क्या बता रहे थे आप लोग? सर ऐसा तो नहीं है आपने जो डेट डाली है उसी डेट को ही आपको शो होगा? नहीं नहीं, उससे क्या पहले ना हो। पहले लोग पहले जमा। अब देखिए ना, अवैस मक्का, चौधरी उमैर और शकूर अहमद, इन तीनों का टर्न इन आ रहा है। वैसे क्या मैं शकूर अहमद आपने वर्ड फाइल भेजी थी? शकूर अहमद साहब जी सर, जस्ट आपने, सिंपल फाइल भेजी। जी जी ये भेजी सर, सिंपल फाइल भेजी थी। है ना, फाइल डॉट ठीक डॉक्स। चले आपकी तो आ गई, खाली फाइल थी शायद। खाली फाइल भेजी सही, थी। आपकी तो आ गई। और किसी ने कोई भरा हुआ भेजा? सर मैंने एक पिक्चर भेजी है। आपका रोल नंबर, आपका क्या क्या नाम है? यही है अवैस मक्का। और सर वैसे मैं दोबारा ट्राई करते हैं, अल्लाह करे। हाँ, capture.png। देखिए मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, इंशाल्लाह ये खुल जाएगा मेरे पास। ये देखें, आपने ये भेजा है ना, मेरे सामने खुल गया, आपको नजर आ रहा है? आपने कोड भेजा है मैटलैब का, बेसल मूवमेंट और एक सिलेंडर टाइप बना हुआ है। ठीक हो गया? ये मेरी स्क्रीन पर डायरेक्ट नजर आ गया, मुझे डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नजर आ रहा है आपको? जी हेलो, सर आ रहा है।
ठीक है, तो इस तरह से आप सब लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, आपस में से पूछ लें, तो इतना मुश्किल नहीं है इसको करना। मगर ये जाहिर है माशा मॉडर्न, आपको पता है कि मॉडर्न वक्त आ गया है। अब इसमें अब ये है कि हम ऑनलाइन सारा कुछ जमा होगा और सारा कुछ, तो इसीलिए आपने अभी अपने क्विज़ेस, मैं यही बता रहा हूँ बार बार, मैं कोशिश करूँगा 38 पे आपको भेज दूँ, 638 पे इंशाल्लाह। अब क्या होगा कि आप ना जब यहाँ जाते हैं ना पोस्ट पे, जैसे कहाँ गया, पोस्ट में जाए ना हमारी, जब आप पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे वो मैं ना इधर ऐसे करके ना ऐड करूँगा क्विज़ को, कंप्यूटर करके यहाँ पे क्विज़ को ऐड कर दूंगा। आपने क्या करना है, वो क्विज़ को डाउनलोड कर लेना है। मसलन मैंने अभी जो है, जैसे एग्जांपल मैंने ये क्विज़ दिया था इनको, इस पे इनकी जान चली गई। वैसे प्रैक्टिस के लिए आपको ये आप डाउनलोड हुए बाद, चूँकि बहुत से स्टूडेंट उधर ही परेशान हो गए, सर जी की कर दिया था हमसे। तो खैर मैं देखें ना, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ क्विज़, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही अब यहाँ से अपलोड होगा, मैं इधर सेंड कर दूंगा आपको, ये सेंड हो गया। अब आप देखें आपकी तरफ एक क्विज़ आ गया। अब आपने ये, मैं 38 पे करूँगा, विद इन 2 मिनट्स आपने क्विज़ को अपने पास डाउनलोड कर लेना है। खोल लें और डाउनलोड करने के बाद उसको आप कागज़ पे अपने हल करना, 15 मिनट तक आप पूरे लगाएं उसके ऊपर, मेरा जो अपना मशवरा आपको। चलें 16 मिनट कर लें अगर आप सर चाह रहे हैं। 20 मिनट तो होने चाहिए। अब 20 मिनट नहीं ना, मिनट आपको टाइम कम दिया जा रहा है, वो यही साइकी रखी गई है ताकि स्टूडेंट्स को जो है ना वो चीटिंग से अवॉइड रखा जाए। क्योंकि वो काफ़ी कहानियाँ है ना, अब आप तो अपना छोटी सी क्लास देख रहे हैं ना, हम तो यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ये जूम पे चल रहा था, अफसाना हो रहा था, एक दूसरे को भेजे जा रहे थे, इसलिए बहुत ही कंस्ट्रेन रखा गया था कि बहुत बड़ा क्विज होगा, आपके पास कम ही टाइम होगा, तो आपने अक्लमंदी से करना है। तो इस सबके लिए कम टाइम है ना, आप कम करें, बाकी में तो हमने उसको खुद ही सेट करना है। रिलेटिव ग्रेडिंग वैसे ही होती है सारा कुछ। सर आपके सामने वीडियो तो शो हो रही होगी ना, अगर कोई इस तरह हिलेगा या कोई कॉपी करेगा तो फिर वो अच्छा, असल में मैं आपको हाँ वीडियो का किस्सा सुना दूँ। मैंने यही सोचा कि ये वीडियो मगर वीडियो में ना बहुत मसाइल आ रहे हैं, इतना आसान नहीं जितना लगता है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे अभी तो चलो आपकी क्लास में 9 हैं, तो इवन 9 में भी ना प्रॉब्लम है, बहुत से बैंडविड्थ के इश्यूज आने लगते हैं। मतलब जैसे अभी ये पेशावर वाले बता नहीं रहे थे, एक हमारे स्टूडेंट थे, वो कह रहे थे जी मैं पेशावर में हूँ, मुझे तो वीडियो आती नहीं है, या पता नहीं कुछ ऐसा का मसला बता रहे थे वो, तो हमने कहा था नहीं चलें वो रहने दें। तो एक तो ये मसला है। दूसरा ये हमारे एंड में जो बड़े बड़े शहरों में भी लोग हैं, उनके पास भी इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि वो 50-50 स्टूडेंट्स को देख सकें, या इवन 9 स्टूडेंट्स के लिए भी बैंडविड्थ कम पड़ जाती है। ठीक है, मैं अपने घर में, मेरा वाईफाई काफ़ी लोग इस्तेमाल करने हैं, मैं इतने लोगों की अगर वीडियोस लूँगा तो वो इतना आसान नहीं होता। और आपके एंड पे भी प्रॉब्लम बनेगी कि भाई आप स्क्रीन कर रहे हैं और ज़ाहिर एक नेटवर्क के थ्रू यहाँ आ रहा है, तो आपका नेटवर्क लोडेड हो जाता है। तो ये सब वजूहत की बिना पे ना फिर ये जो कंडीशन थी ना वीडियो वाली, वो वैसे एक्चुअली हमने हटा दी है। मगर ये कि अगर आप कहते हैं तो मैं वीडियो रख लेता, मगर उसमें मतलब कि हो नहीं पा रहा। बहुत दफ़ा लो बैंडविड्थ की वजह से कनेक्शन ही ख़त्म हो जाता है। अब कनेक्शन ख़त्म होना ज़्यादा डेंजरस है, जब आप कनेक्शन ख़त्म कर देंगे तो अपलोड ही नहीं होगा चीज़ें। इसीलिए हम तो लोग ने ना वीडियो रहने ही दें। हाँ, इसीलिए हमने ना वीडियो की कंडीशन ख़त्म कर दी है। मगर ये कि आप अपने एंड पे ये है कि चीटिंग ना करें और आप बिल्कुल नोट्स देख लें, बुक देखें, हमें से इतराज़ नहीं है। अपने तौर पे आप मगर दूसरे को कुछ हिंट शिंट ना दें, वो उसी का अवॉइड करें कि पेपर बहुत टफ होगा, पेपर लंबा होगा, टाइम कम होगा और 20 मिनट एग्जैक्टली दिए जाएंगे, बस ये कि 2 मिनट आपको दिए जाएंगे ताकि आप डाउनलोड करें, मगर उसके अंदर सारा फोकस लीजिए ताकि आप बस जो है ना करते रहें सवाल। ठीक है, ये सारी स्पेसिफिक मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली हमने बाकी लोगों को कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको इसलिए बताया कि ज़ाहिर है मैं नहीं कहता कोई ऐसा मसला, आप थोड़े से स्टूडेंट्स हैं और ये सारा कुछ मतलब वहाँ बाकी 200 स्टूडेंट आपको पता है शरारती भी बहुत होते हैं, तो उनके साथ डिफरेंट तरीक़ों से हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, आई होप ये प्रेजेंटेशन से आपको फ़ायदा होगा। मैं वापस अब लेक्चर की तरफ जा रहा हूँ। सॉरी, अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So chapter 4 we will start today, and it is about, अच्छा, I was telling you actually that there are actually 3, तो मैंने बुक अपने कोर्स के 4 CLOs बनाए, बट देन आई विल मॉडिफाई
Mainly there are three areas. One is channel modeling, second is communication, and third is system view, multi-user view, or how does a full-fledged wireless system works with all the multi-user concerns or phenomena, not a single user. So in chapter 3, you just concern about linking the data of a single user, but we were able to see single user in the context of other users in CDMA and OFDMA and GSM. All right, but here we will mostly focus yes on the three systems, but from multi-user perspective, from system view, from the overall holistic view of these current and future wireless systems. So you could see here that actually wireless is completely different from radio and TV broadcast, because there you could see that you had a single broadcast, but in wireless every person is talking to some other person and they don't have a broadcast, but they have a separate completely different communication is going on. Similarly, it is also completely different as compared to walkie-talkie communications. So walkie-talkie communications, but because here you can connect not only with walkie-talkies for very small distances. So here you can connect with very large distances, and you also require wireline structures. I can talk to a mobile in Canada. So a lot of my communication will be taking place over optical fiber. So cellular system actually addresses multi-user communication. How you can put all these different users which had different requirements, from Wi-Fi to mobile communication to WhatsApp, in one system. So we have first industrially we have two spectrums, licensed and unlicensed. So licensed spectrum, quite expensive. It has to provide immunity from any kind of interference. I would not want that if I am talking through a mobile for which I am paying, some other voice is interfering, or someone is listening to my noise, my sound. So you have to have a lot of immunity against these types of interferences. So the bandwidth is very expensive. So government gives these bandwidths for industrial use, and so they are not that very large, but they are quite expensive. And then you want the wireless system to be spectrally efficient. So we have learned this thing, efficiency, spectral efficiency, is that you want to put more number of bits, you want to utilize more number of degrees of freedoms over a given bandwidth. More data should be sent. And power, you can transmit as much power as you want in licensed spectrum, but outside the licensed spectrum the power should decay. Now what is unlicensed? Unlicensed spectrum, which is not, government has just left it. Okay? You can develop your own radio and you can send your signals in unlicensed spectrum, but there is a power constraint. You cannot send very large power. It will cause interferences, and there is no concern of spectral efficiency. Okay? So this unlicensed spectrum is actually available for experimental systems, to aid in development of new wireless technology. So for every license we have these unlicensed spectrums. Now focusing on cellular systems, we know that they are deployed now internationally. They have been deployed, and huge capital is invested in these systems. So the structure is very simple. You have these base stations for every cell. So whole coverage area is divided into cells. For example, Lahore
So let us say Zong, it has divided Lahore, let us say into, I don't know, 20, 40, 80 or 90 cells. So mobile will communicate with the base station closer to it. So you know this figure, very famous figure. He is saying see figure 1.2. So 1.2 actually is in chapter 1. No problem, we can see that. See figure in section 1.2, because you know figures are these are the figures. So you can see coverage area divided into, these are the base stations and these are the cells, and then you can see that these cells are connected by a wire line to an MTSO, and you can read also from that chapter. All right, so yes, all right, so you could see there. Now we know we have these physical layers and we have medium access layer. There are two issues. One is multiple access. How can we put so many users in a single system? And second is interference management. So if I'm putting so many users, okay, they might have, you know, share the same time frequency in space, and they might cause interference to one another. How can I handle these two things? This is the main concern of multi-user communication. So this is shared time frequency in space, as we saw in GSM in the last chapter 3. So you could see that you had 200 kilohertz bandwidth and it was being shared in a TD, time division duplex system, among the 8 users. And then let us say if it is shared, then how can we deal with the interference? Second is of the next layer, and that is how can we switch from one base station to another, as we are moving from one point to, let us say I'm going from here to Jail Road, and you know this is a large distance and I will be switching various base stations. This will be called handoff. So you will focus on these two issues of multiple access and interference management. And of handoff. So you all know you have an uplink and a downlink. You know, uplink is from the mobile to the base station, downlink from the base station to the mobile. And we have these strategies, time division and frequency division. So both are in operation, but mostly FDD is used. Most are FDD frequency division, which means uplink has a certain set of frequencies, downlink has a certain set of frequencies, and they are uncorrelated. They are far apart. Their coherence bandwidth, their gap is much greater than the coherence bandwidth. So that is why there is no correlation between their channel coefficients in FDD. Right? And yes, the transmitter they differ by 100 dB. Because receive signals are very small and transmitter signals they have large power at the base station. So we will be focusing on frequency division duplex systems. First of all, we cover the entire area by cells. Then each cell, you know, we all know it is divided into sectors by the help of antennas. You could see these antennas which are, you know, near your home. You will see that you have antennas which are covering, which are focused on a certain angle
of the 360 total 360 angle, they cover a certain angle. For this antenna will cover this much angle, this much angle, this much angle, like this, 120, 120. Yes, so bidirectional antenna and all that. So sectorization is good when you have a tall base station and obstacles are not around that. But if you have short base station is not around that, and you have high buildings, or your base station is also low, for example, it is on top of a lamp post, then you will have a lot of scattering and reflection. So then the energy of for one sector will go into the will interfere with the signals of the other sector. So we study three famous cellular design systems. Three is 2G, 3G, and 4G. All of them we have studied with respect to communication in the last chapter. We will be studying the uplink and downlink, and then we will also see what is a narrowband and a wideband system. So one question I asked last time, and Mr. Salman answered that. So that answer will also come here: narrowband and wideband. So so narrowband, we have narrowband channels, and we use frequency reuse. For example, if I give, let us say, these much channels to one user, to one channel, I will give these many channels to another base station or another cell, but that will be quite far away. Some student has a point to make? No student has any point? I thought that some student. All right. So what we do, so placing them far apart in frequency, for frequency reuse, this means you will have actually point-to-point non-interfering links. So so there will be no interference. Example are the famous GSM system. So they have very high signal to interference plus noise ratio. So you could see that I gave one set of channel, let us say 200 kilohertz, to one user, but that 200 kilohertz, let us say it is around some megahertz, that will be given to some other user, but that user will be far away. So its signal will not be interfering because it is very far away. Hence they will be in, point-to-point communication, non-interfering links and all that. But in second and third G systems, CDMA and OFDM systems, they are wideband. So they are not narrow band, because you can see that in CDMA the whole signal is spread in time. In OFDMA you can see that you have so many carriers, two carriers will carry your signal throughout the whole spectrum. So the key feature of these two systems is universal frequency use. You are utilizing all the frequency rather than a set of narrow band frequencies as in 2G. So here there will be interference, and yes, they are different, CDMA and OFDM, how the signals are spread, which we will see in a while. CDMA, we know we have direct sequence spread, so user data is actually low rate, but it is moderated by pseudo noise sequences, so it becomes, because of the chip rate, it becomes a very high frequency wideband signal. There will be interferences. So famous is IS-95. While in OFDM, we saw that actually what happened, we were operating in a time frequency grid. So if you could remember in chapter 3, we saw in last lecture that, I think last lecture, that one user, let us say, is given at this time, one user is given this frequency. In the next time frame, that user will be given a different set of frequency. So it will be hopping in a time frequency grid. All right. And we also would, and let us say if I want to add frequency diversity, then I will try to make sure that my frequency
time frequency grids or boxes are further apart. You know, they are actually, you know, in different coherence bandwidth. If you remember that L and R, I say NC over L and all that, so that you can also get frequency diversity gain. So here again you will see that it can be kept orthogonal, and the users will be sharing the same bandwidth, but inter-cell interference. For example, another cell might have given the same time frequency resource to some other user, so it will be interfering, but within a cell you are deciding. Okay, so if you get a frequency time resource to one user, you won't give that to the other user, and you have a lot of space, you know, you saw in the chapter 3, so you can put a lot of users in the time frequency grid. So OFDM has also the advantage of full frequency or full degrees of freedom used as in CDMA. CDMA everything was spread. Here you can just spread the signal in the time frequency grid, and there is no inter-cell interference. So we will also see the power profiles of the signals that are transmitted, both for uplink and downlink. So it will tell us what is the peak value and average value of the signals. So you also see how does the power amplifier settings and what is the overall power consumption of our system. So you also have overhead. Rather than just sending the data, my voice or video, there are also overheads. For example, authentication, allocation of traffic channels, or like this channel is this user, this user. So you have to send these allocation data and all that. Training data for channel measurement, we just saw. You send a known sequence. Okay. So the user will know the known sequence. It will take match filter with known sequence, and you will get the channel estimated channel coefficients. So these are extra data that you need to send. You might need to send the transmit power level. What is my transmit power level? Do you want to change that or not? And acknowledgements, you need these things. So these are network parameters that are added on. So these network parameters also require signaling. Achha, you could see in the last lecture we were actually spending I think 25 minutes, right, in the last lectures. So we had to cover 75 minutes extra. So as this lecture ends at 7:15, so I know this is also Azan time. Oh, my diary. So I think roughly I had one lecture was I think 25 minutes extra. We had 7, 25, 35, 40, 25 minutes were actually covered for both. So we had covered at least 50 extra minutes. So we just need to cover, 25 more minutes, and in this way our lecture will be covered. All right. So today from 7:15, all right, up till 7:40. Actually we covered 2-3 minutes more. So adding them, this means we have got 55. We just need to cover 20 minutes more. So 7:15, 25, 7:35 at the max. This class will today go on till 7:30. Attendance and yes, maximum. At 7:35, inshallah, I will end this class. All right. So let us see what we were studying here. Now, first of all, we start with GSM. All right, 2G. Narrow band, these are called narrow band cellular systems. And this is actually, you will see it is an idea of
developing point-to-point wireless communication. And the idea is that no two simultaneous transmissions interfere with each other. And so we have a uplink and a downlink. And let us say they are at different frequency. It is a FDD system, frequency division duplex, different frequencies and all that. But we can design our multiple access. So the questions that we need to answer for every system is multiple access and interference management. That is what is needed to be answered. So we will be allocating each user a very narrow band of frequency, and we won't be allocating that band to any other user, so that all of the users are at orthogonal set of frequencies. Hence, interference is minimized. So that is, I have told you, for this uplink and downlink are separated in frequency. But there are also in industry TDD systems where you have the same frequency for uplink and downlink, and they are just separated in time. But we will be covering FDD because FDD is now the norm for all 2, 3, 4G systems. So we have FDD scheme. So two frequency bands are separate apart. One is for uplink, other is for downlink. Let us say W is the total bandwidth for uplink as well as for the downlink. Now what happens in 2G, that users are scheduled to be non-overlapping in time and frequencies, thus eliminating intra-cell interference. Intra means within a cell. So within a cell, no problem. Let us say if I give one user, as you have seen in chapter 3, we did one example, very, very important example. So I told you, let us say, all right, we have a 200 kilohertz bandwidth. So we have several 200 kilo bandwidths. So each 200 kilo bandwidth is shared among 8 users. Now how it is shared? That 200 kilo bandwidth is separate for all the one set of 8 users, they are given 200 kilohertz. Another set of 8 users, they are given 200 kilohertz. So first of all, you could see that all the different users, they are given different 200 kilohertz. Now those 8 users which have the same 200 kilohertz, they are time division duplex in that 200 kilohertz. So you can see that they are each of the users will be given a different time frequency resource that will be non-overlapping, and hence there will be no interference. So each narrowband has a width W over N. So let us say अब W megahertz जितनी भी हैं, but N are the number of chunks. Let us say, you know, we saw in GSM chunk is 200 kilohertz. So let us say if this is, let us say 2 megahertz, which is 2000 kilohertz, I can make 10 chunks. 2000 kilohertz divided by 10, I will get 200 kilohertz. So one narrowband will be of 200 kilohertz. Each cell is allotted some n of these channels. So yes, let us say you have these n narrowband channels. Let us say 10. Let us say my cell will be given 4 of those 200 kilohertz. And they might not be contiguous or continuous. For example, I give 200 kilohertz, let us say 950 at, the other is at 950.2. No, not necessary. I could be given the channels with some wide space. So idea is that in that cell, all the transmission will be restricted to those n channels which has been assigned to those small n channels out of the capital N channels that have been assigned to that cell. Now, within a cell, no problem, because all the users are in different n channels, and even if they are in the same n channel, then they are in different time domain. Now, but interference can occur with a neighboring cell. So you can see in figure 2, this you have also studied in your previous undergrad courses.
In here we don't, now students are not studying communications, so there's no we just study analog digital communication. Their cell structure is not told, but in some campuses of UT where wireless communications is taught, so this structure is taught there. So this figure depicts cell that can use the same channel simultaneously. So you can see what is happening. For example, this 2 channel, let us say I give it 4 sets of frequency or 4 values of n. Now around I don't give, but here I again assign 2 here, again assign 2 here, very far away. This will have the same set of frequencies as set of frequencies that were available for 2. So a lot of distance, hence there will be almost no interference. So the ratio n over n, so you know n are the total number of your narrowband channels, n are the channels that you have assigned to a given. So this is called the frequency use factor, because let us say n is 100, capital N is 100, and let us say small n is 20. So this means that 20 over 100, 1 over 5. So you can see that you could say that I'm utilizing 20% of the channels. So in the above you could see that as you have 7 different numbers, total number 7, so yeah, you are having 7 different allocations or total different cells were 7. So each one of them will have, each one of these 1, 2, 3, 4, 6, 7, they will have different n channels. Total of combined, all of them will have NC channels. So you could see here that I have, let us say if n is 7, then I can give only 1. So you know 7, so this will be 1 over 7. The ratio could be, it could be different. For example, n could be 100 and 7 could be 700. But overall ratio would be n over n, because n is the reuse and 7 is the total. So, but you know what is the total bandwidth was W, and we are just using 1 over 7th of that W in any base station. This is quite reduced spectral efficiency, or not using all degrees of freedom, because you had W bandwidth, but because of avoiding interference you are just using W over 7 bandwidth. This is the price that we have to pay for reducing interference from neighboring cell. So, but you know, industrially you have to do more calculations and you have to check the traffic, and then you assign the reuse pattern. Okay? So exercises are given. Within a cell, no problem. Each user is given different channels in time and frequency, so no problem. Let us try to understand allocations in GSM system, the famous system. We have done this in example 3.1. So you know each narrow band is 200 kilohertz, W over n is 200 kilohertz. Depending on n, you can get what is W allocated bandwidth. Normally this W is 50 megahertz, or you can say that so you can just see how many number of n would be available. If you just divide 50 megahertz by 200 kilohertz, so 50 megahertz actually become, you know, 30 come here, this will become 50,000 of 5 into 4 zeros, kilo cancels, and this is 40, 50 megahertz, 4 zeros, 2 0 cancels, so you have 2 zeros, 500 divided by 2, we have 250 different channels are there in GSM. You could see 200.
Time, you know, if you could remember, number of slots were 577. 577 slots. 577 microseconds was the time of one slot for one user. So this is the slot which will be given to one user. In 200 kilowatt, let us say there are 8 users. The first user will begin 557 slot, and the second user will begin 577 slot, and this way, as we studied in the example of chapter 3. So n simultaneous users are scheduled within a cell. Okay. One in each of the narrowband channels. Yes, at a given time, fixed time. So you know one user will be given all the 200 kilohertz. So if you have n different channels, so n users can basically communicate at one time. But actually, more of the users will be communicating because of, you know, this multiple access resource. You are dividing them in time, hence more users will be there. At least n into 8. If let us say n channels are there, let us say n channels are 7. And each channel is divided into 8 users, so n8 or 8n users will be there. So to minimize co-channel interference, means interference within the same channel. So yes, we will make these n channels far apart. So let us say if one user, let us say is a 950 megahertz, the other channel or in the same cell I will have at 960 megahertz. There are a lot of difference between them. And we know that each narrowband is shared among 8 users in time division, as in example of chapter 3. So we have seen that each user was periodically allocated a slot out of every 8 slots. So we have no interference from within the cell, because within the cell, first of all, the narrowband channels are far spaced, they are not causing any interference. Second, within that narrowband, each user has a different time slot, so no interference. There will be interference from neighboring cells, but that will also be minimal, because you can see that each user or each cell that will be repeated with the same frequency after a very far distance. Hence, almost it will be point-to-point non-interfering wireless links. So allocation हमारा इंटरनेट बंद कर दो, लिंक नहीं जा रहा. Everyone can listen to me? I think everyone can listen. There was some internet problem. Acha. So issues are the same as for point to point. And all right. So we have no interference. This means signal to noise is very high. Signal to interference is very high because there is no interference. Signal to interference normalization will be very high. And we use coherent. Remember what is coherent? When you know the channel coefficients, and you know now how to find the channel coefficients by estimation. So we have these pilots or training symbols, and hence we can get the channel coefficients. So yes, we have a very good system, almost no interference. But what is the drawback? Degrees of freedom. Not utilizing the bandwidth efficiently, not putting large number of users. That is why in GSM, if there are more users, the call gets dropped. But let us study. Achha, let us think about reliability. How my link is how much reliable? How can I rely? First, you can see the slot length is very small, 577 micro. Coherence time is in milliseconds, so it is in the same coherence time, so you cannot get anything about time diversity.
If you don't apply coding or reputation coding on all that we have studied antenna diversity, let us say we are not applying. So in that case, you cannot apply time diversity if you do not apply all that schemes, because slot microsecond is much smaller than milliseconds. Same coherence time, no diversity. Then you have a bandwidth of 200 kilohertz, which is also very fairly narrow. Why? Because the coherence bandwidth is larger than this 200 kilohertz. Why? Because delay speed is 1 microseconds. If delay speed is 1 microsecond, then what is the coherence bandwidth? Coherence bandwidth, it is roughly 1 over delay spread. It could be 1 over 2 TD depending on the modeling. Let us just say it is 1 over TD. But TD is 1 microsecond. 1 over microsecond. 1 over 1 microsecond, it means 1 over 10 to the power minus 6. Alright. But normally, we saw in the last lecture, it is actually 1 over 2 TD. So 1 over 2 microseconds, or 1 over 2 into 10 to the power minus 6. So 1 over 2 becomes 0.5. And 10 to the power minus 6 becomes 10 to the power 6. 10 to the power 6, 0.1, 0.5. This becomes 10 to the power 5 into 0.5. Or 10 to the power 3 becomes kilo, and 10 to the power 2 becomes 500 kilohertz. So coherence bandwidth is 500 kilohertz. Much greater than 200 kilohertz. So you cannot get any frequency diversity. Your total bandwidth is in one coherence bandwidth. So you cannot get any diversity gain because of the frequency diversity. Now what is the problem? If you do not have diversity, then you are increasing SNR, but error will decrease very slowly. Now how can we solve this problem? We saw in chapter 3 we have time diversity, repetition code, and we can also have your convolution codes, where you will send your data not once, but you will check another coherence time and you repeat the data, or you can use time coding, coding techniques, convolution and all that coding. You can also use frequency diversity. For example, you say, all right, now I send the data to this channel, now I will send my data to the other channel at some other channel, at another channel at another 200 kilohertz, which is very far away, more than the coherent bandwidth distance far away. So I will again get frequency diversity. So y-square depends on frame error, and normally the errors are clustered. So but once you use this frequency diversity, you are sending the other data at some other frequency, then clusters will break up, because in the other channel you might not have errors at that time. This is the advantage of diversity. So now what are the signal characteristics? First of all, we have an error bandwidth 200 kilohertz. W over N, you can find that, all that. All right, now I've explained to you everything. Now, what is the sample rate? All right. So sampling rate, he has said that it is given by N over W. Why? Why N over W? Because you can see, this is what is W over N. W over N is the bandwidth. Bandwidth is W. So your baseband signal is of a bandwidth of W. So what is the sampling? It is 1 over W. Or the very specific 1 over 2 W. Alright. So if I have 1 over W, or 1 over this thing, N over W, 1 over 200 kilohertz, bandwidth is actually yes, bandwidth 200 kilohertz. Yeah, remember this, once I say 200 kilohertz GSM, this means this is not the baseband signal. This 200 kilohertz has been located at some passband frequency. Alright. So you take it the baseband, this will be
from 0 to 100 kilohertz, minus 100 to 0, and from 0 to 100 kilohertz. Yes. So bandwidth is W. I will have this 1 over 200 into 10 to the power 3 into the power 5. This becomes 10 to the power minus 5. 1 over 2 becomes 0.5. 0.5 into 10 to the power minus 5. Will become 5 microseconds. Here sample rate is small, 5 microseconds. So sample rate is small and it might resolve multipaths depending on the multipaths. If the multipaths they have a difference of the order of 5 microseconds, then you can also resolve them. Otherwise you cannot resolve them. For example, other multipath is 5 microseconds away, then you can resolve them. Otherwise, if all the multipaths they squeeze in on 5 microseconds, then you cannot resolve that. For resolution, you need to have a tabbed delay line. So it must be in the other sampling time, then you can resolve that. Now the transmit power. So we have average transmit power and we have peak power. Both are very important and they can give us an idea of the performance. Because power is how much power your system is taking. So these average and peak power are important and we try to find them. So from the power amplifier, it depends on the peak power. So they are insufficient, but they depend on the peak power values. So what we do here is that we design with reduced peak power for a given average power level. So we see what is average power level, we see what is the peak power level, and we design it for a little bit reduced peak power. And this is called PAPR, peak to average power ratio. What is the ratio between peak and average power? So this is more important case of mobile, because in mobile, you have to charge, but in base station you are direct VABDA. So that is what is more important for a mobile, this peak to average power ratio. So the signal sent by the mobile user signal is confined to a contiguous narrowband frequency of 200 kilohertz. One slot 200 kilohertz is given. That 200 kilohertz is modulated into a single carrier. That is why it is called a narrowband. All that single carrier modulation using constant amplitude modulation schemes. So constant amplitude modulation schemes. What is the meaning of constant amplitude? Because the amplitude is not. They are not AM, but they are like FM. Where the amplitude does not change, or digital schemes which operate like constant amplitude. If they are constant amplitude, then PAPR will not vary very much, because the peak to average power ratio is approximately the same, because you are using constant amplitude. But the signal that is sent from the base station, you can see that it consists of a lot of signals. So you have n different channels, n such signals are there. For each of the 200 kilohertz channels. That will have a very large PAPR. Losses impact on network and system design. So we have seen this is design. This complexity is simplified because of our frequency time resource distribution.
but there are problems. Or then there's no free lunch. There are problems. Alright, time is 7:30. So we are already 15 minutes up. We just have to cover 20 minutes. I will end the lecture here. So in the next lecture, we will start from section 4.2.2, impact on network and system design. I do not know how much we would be able to cover the next lecture, but next lecture we will end the class at 7:15 as usual. So these 3 lectures which were great, any student who is present in any of the 2 lectures among the 3 lectures, he will get an extra attendance for the lecture that was missed. So now I will go back to your attendances. If you have any question, you can ask before I start taking attendances. All right. Page 27, 19, PhD 5, I think is absent. 1835. 1835. सर वो नमाज पढ़ने गया, उसका मैसेज आया था। अच्छा, उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया। क्या नाम था इनका? सर सुमेर खान। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आई थिंक इन्होंने मुझे भी मैसेज कर दिया होगा। अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, वो अभी भी माशाल्लाह से अभी भी हैं अटेंडी में, तो अभी भी नज़र आ रहे हैं नज़र में। ठीक है। Alright, 35 is present. 36. 1836. Yes sir, yes sir, yes sir. 1837. 37. 39. 42. 62. 1862. 1863. 1941. Present. 1942. Present. 1943. Present, sir. 1946. Present, sir. All right, thank you very much. All right, your attendance has been marked. All right, thank you. So I will stop the recording.